दोस्तों, आज हम देखेंगे सैमसंग 860 ईवो साटा 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव का अनबॉक्सिंग। ये है सैमसंग का 860 ईवो वी नैंड वाला साटा 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव 250 जीबी का। ये मेड इन चाइना है और ये बनाया हुआ है 2018 में। इसका मॉडल नंबर है MZ76E250BW। ये 3D VNAND टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, इसलिए इसका रीड और राइट स्पीड बहुत ही फास्ट है। ये 6 गीगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र करता है। हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में ज़्यादातर हार्ड डिस्क लगाया हुआ होता है और वो 5400 और 7200 आरपीएम का होता है। पर जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसमें हार्ड डिस्क की तरह कोई प्लेटर नहीं होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ चिप्स होता है और वो चिप्स डेटा को स्टोर करता है और डेटा एक्सेस करने के लिए देता है। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन गाइड बॉक्स में। इसमें एक मैजिशियन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है अगर आप डेटा को माइग्रेट करना चाहते हैं अपने इस सॉलिड स्टेट ड्राइव में अपने हार्ड डिस्क से। तो ये मैजिशियन सॉफ्टवेयर आपको सैमसंग के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका इन्फॉर्मेशन इस टिकट में दिया हुआ है और इसमें बाकी सारे कुछ दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। ये आप पढ़ सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारे SSD को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। ये है सैमसंग का 250 GB 3D VNAND वाला सॉलिड स्टेट ड्राइव VNAND SSD 860 EVO। दोस्तों, ये 850 EVO का नया वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। इसका डेटा एक्सेस स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। सैमसंग दावा करता है कि इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 6 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसे हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा लैपटॉप कैसे और तेज़ चलता है। This is a laptop and today we'll be replacing its hard disk with a SSD. SSD stands for solid state drive. Now, before performing that, we'll record the booting speed of this laptop with the hard disk fitted in it. Now, let's check the boot speed with hard disk. This is the power button. Now, I'll press it 1, 2, 3. Now it is starting, that is booting. This is the boot screen. Windows is booting now. It is still booting. Now this is the main screen, this is the lock screen. Now we are going to replace the hard disk with SSD.
Now we'll check the boot speed with the SSD fitted in it. 1, 2, 3. Now we are going to compare the boot time of the machine side by side with hard disk and SSD. 1, 2, 3. So the result is self-explanatory. If you want your machine to be faster, then definitely go for a SSD instead of conventional hard disk drive. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep watching.